Hello, welcome to the stream. Today we are making a game, and we have been making a game for a while. So I just want to continue working on it. साथ में सोचा कि स्ट्रीम भी कर लेंगे, बहुत टाइम हो गया स्ट्रीम करके कुछ. 1 second, let me just check. Y- Yeah, yeah. Okay, back to the work. Let's see if people will join. I have no idea. Let me just set up few things. Talks, chat. Okay. Hmm, I guess I'll just keep this here. Okay. We are doing a vertical stream for some reason. I don't know. Let's just see how this turns out. I need this also. Okay. To, 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 to. Evaluate is action on cooldown and interest emitted. Interest emitter. Interest and references. Intensity is not being used anywhere. Oh god. Evaluate and act. Evaluate and act. Evaluate. Busy work. Busy true. Trust. Influences. And evaluate influence.
intersection, intersection. Okay. Interesting beta source position we are taking. उसके अलावा nothing else is being used. Beta source. I think यहाँ ऊपर एक डाल सकते या यहाँ पर ही यहाँ डाल सकते I guess. So $10 if it meter dot like animation curve. This won't work out in a way, but mm, 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 mm. I mean, it can work out in a way, but let's see, meter intensity, emitter chance, sound intensity. Evaluate and यहाँ पर अपन रखेंगे divert global expression
इस नियम से यूजुअली आता नहीं कुछ भी. Emitter dot type emitter out of range. Let's get back to Unity now. अब Unity side में जो है सो we have the agent, we have director, and let's make that instance and add a curve to it, and that curve will edit value. If it is less than the thing, the starting measure है, so it will return starting में higher the value. So maybe we'll do ulta. If should evaluate is more than intensity. Intensity, if we keep like 1 and 2 at the starting, chances of it being more would be high. So we'll do it ulta. If should evaluate is less than, yes, then return. That means this value should be now, it was right. If it is more than return, so starting, yeah, higher the value, better the chances of not returning it, basically. So if it's like 8, then we have less chance of returning it. If it's like 10, then there's no chance of returning it. Because should evaluate will always be less than 10, plus or equal to 10. So if it's 10 or anything else, then should evaluate like, even if it's like 10, so 10 is not more than 10, you'll do it. If it's 1 but the value is 10, then we'll have chances of doing it, basically. So yeah, initial value at 0 0, I think this works. Time 8, that's the maximum intensity that we go at. At 8 we go at 8 10. And we'll edit this, we'll make this 5. We can edit this and make it like 3, I guess. Yes. So at the start of the life cycle, the chance of being a chance of acting on something is relatively low. Later on it increases. I just want it to be a bit more aggressive after 3. Another key we'll put, and we'll reduce the aggressiveness here, and then have a peak slide at 4 5 6 onwards. Yes, something like this. I think this should work. Hopefully it will work. Let's
Let's see, console object log. I'm just gonna do a bit of vertical streaming. I don't think this is working out. Last time also when I did vertical streaming, no one really checked it out. But let's see. Mainly what I want to check abhi is agent behavior and if it's acting upon player interactions or not. Hmm. Okay. Point of interest ignored. Is ignored again. Point of ignored. So yeah, I think it is working. Oh, in log में I think I need to also add intensity chances to the trigger emitters. Hello. 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 I think this also needs a bit of tweaking because देखो देखो प्लेयर के अंदर भी ये दो है चीज़ा idle emitter. Oh god, he's mic emitter, but how? Okay, it is getting ignored at times, but at times it does not. Yeah, suspicion was pretty high, and it got me. Hello. Okay. I guess it's kind of working. I'm not sure though. This is, yeah, it's taking a pooled emitter, so ये सही काम कर रहा है. As intensity goes higher, the chance of the dude acting on an action would be higher. I guess it makes sense, right? It should make sense. I think it makes sense. Let's try.
Let's try again. This time a bit more organically. Oh fuck, I forgot to. Forgot to do this. Figure amita. Amita. Mm, area meter. Oh yes, we have to do this also. एरिया के अंदर भी मैं सिमिलर वे में करना चाह रहा हूँ. Figure emitter will also have similar same thing. So emitters have intensity chances, and based on the intensity chance, hmm, maybe the chance of pop, 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 pop. Yeah, I think this should give me some interesting results. Make sure कि ये दिख रहा है. Okay. Oh God, I missed it completely. ठीक है कोई बात नहीं. Oh shit. What are you doing here? Jump scare working. Vectors, node handler, node groups. Okay.
और मैं भैंचोद बार बार यहीं जा जाऊंगा। Okay, the map is actually quite big. Very, 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 very big. So one can get lost. Oh God. Agent activated. Found a note. He is supposed to be here, but I cannot see him because he is in idle mode. Oh God. He was painting. Oh God, he's chasing now. Why did he? Oh, because I'm talking. Oh God. चेजिंग से मैं बात करूँ बोल के ओ गॉड किधर चेज कर रहा किधर है ओह शिट oh shit oh okay yes it is turning out to be amazing. Maybe a bit too hard. एक लेने पे ही जो है सो इतना डेंजरस हो गया इन्हें ओह नो don't chase me fainting पे चले गए इन्हें I think because suspicion गिर रहा नहीं oh god दवाई दे रहा है I think this is turning out to be a really cool AI.
cool, cool. Oh, many of the triggers are getting ignored, but still, it is it is quite scary. क्योंकि yeah, like look at that, look at that. I'm just going around and around. I need to get out of here. And I think I need to tweak a bit of suspicion. Maybe? I don't know. Or it's choosing me, but I got to see choosing me. Oh god. Okay. We're fine doing speed up. But I'm pretty satisfied with the system. In a way. Maybe ससीमा का ससी सस्पिशन को इतनी जल्दी बढ़ाना नहीं चाहिए. Evaluate and act. बहुत बार ऐसा ब्रेक हो जाता. Yield break, nothing is chosen. So suspicion is basically suspicion combined normal into 20. Find references. Suspicion. This is kind of if action is not activated, then we reduce the suspicion a bit, and else we add the suspicion. I think into 20 करने की वजह से इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा हूँ. Previously, I had the problem of it not getting suspicious as fast as I want. So let's do it 15. Combined normal is basically it's basically क्या बोलूँ मैं, influence of the thing plus global aggression मिला के, that is like normalized local with the chosen influence plus things. So how much the active act has the active act selected act basically has the influence plus some other few other things. Okay. Tell the player have restate hands of level director.
सो ये डायरेक्टर जो है सो एक अलग डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर अलग है। इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ AI डायरेक्टर, दिस इज़ गेम डायरेक्टर। Both have different functionality. Game director handles the game, AI director handles AI. Okay. Uh, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा कुछ भी करने का। चलता। Next up, let's see. Maybe I can tweak the suspicion a bit. It is getting suspicious way too quickly. Okay. Yeah, hello, fair done. It's actually how I want, like top half and bottom half, क्योंकि वर्टिकल है ना, तो होना बोल के ऐसे ही करा मैं। Top half will be visible for half of it and bottom half for half of it. uh, 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 it is mainly done for unity also, ऐसा, so that I can share the complete, like I don't know, screen। एक बार वर्टिकल ट्राई करके देखना चालू था मैं, इसलिए। तो टॉप हाफ में गेम व्यू कभी कभी, या जो दिखाना है, और बॉटम हाफ में सीन व्यू दिखाने के लिए, सीन व्यू एंड हायरार्की। बिकॉज वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, एनीवे। इसके अंदर मीटर इवैल्यूएट कर रहा, मगर स्टार्ट इवैल्यूएशन, आई थिंक सस्पिशन कुछ ज़्यादा ही जल्दी बढ़ जा रहा।
इसके वजह से थोड़ा किच्ची आ रही। अब लास्ट फिर से टेस्ट कर लेंगे इसको। लास्ट टाइम टेस्ट करते वक्त पकड़ा गया था। इट्स क्वाइट इजी टू गेट लॉस्ट इसके अंदर थोड़ा, मगर इस पीसी और मोबाइल गेम दैट यू आर मेकिंग, दिस इज अ वीआर गेम। पीसी में तो खाली बस टेस्ट करने के लिए पीसी कंट्रोल्स भी डाला मैं, बट दिस इज एक्चुअली अ वीआर गेम, सो यू कैन से मोबाइल गेम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मोबाइल गेम की तरह ऑप्टिमाइज करना पड़ता पूरा, क्योंकि ये है एक वीआर गेम। बाद में इसका एक पीसी पोर्ट भी निकालूंगा। पीसी पोर्ट में और थोड़ा बेटर ग्राफिक रहेंगे, मगर क्योंकि वीआर गेम है तो एकदम लो डेप्थ ऑफ फील, मतलब डेप्थ ऑफ फील नहीं, क्या बोलते हैं, लो विज कलिंग वलिंग, बहुत सारी चीज़ें करा मैं इसको इसमें ऑप्टिमाइज करने के लिए। यू कैन सी इन द सीन व्यू कि कैसा पूरा मैप बेसिकली एम्प्टी, मतलब अभी कुछ दिखता नहीं, बट अगर मैं खरीद किया तो चीज़ें दिखते। सेम इज़ विद एवरीथिंग बेसिकली गेम के अंदर। कलिंग, वेरी हाई कलिंग इज़ बीन डन इन द गेम। सिमिलर टू, इनफैक्ट यहाँ पर अगर देखें तो ये बाउंड्री भी देखो, खाली जो विजिबल है बाउंड्री वही दिखती खाली कैमरा के अंदर जो है, बाकी की कोई भी बाउंड्री दिखती नहीं। सो व्हाट इज इट अबाउट? इट इज बेसिकली अपन सबसे पहले जब बना रहे थे गेम, हॉरर गेम बनाएंगे सोचे थे, पोपाई रहता, पोपाई से बच के जो है सो पालक कलेक्ट करना था बोल के सोचे थे ना अपन, बिफोर कॉम्प्लिकेटिंग इट अ बिट, बट दिस इज बेसिकली वही गेम इन अ वे, बट इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स है, लाइक रैंडम जंप स्केयर्स है इसके अंदर, और पोपाई का बिहेवियर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। छोड़, it's basically Slender Man but for VR and some added spice. आ गया देखो भागो। You have to collect 8 notes basically. He can hear us but he won't understand तो नहीं करता, बट अगर मैं ज़्यादा पुकारा करा तो उसको अपनी लोकेशन मालूम हो जाती, एक जगह ज़्यादा ठहरे तो लोकेशन मालूम हो जाती, और एरिया में ज़्यादा ठहरे तो मालूम हो जाता उसको। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं इसके अंदर।
फिर रैंडम जंप्स, ओह शिट। मुंह के सामने आ जाता उन्हें कभी कभी। तो यार ये मतलब अभी आवाज आई होंगी बोल के पुकारने की, वो भी एक रैंडम जंप स्केयर है भाई साहब। Yeah, basically, I'll pause the game a bit. There are like 10 locations, उसमें से randomly few locations are selected, उसके अंदर फिर अलग अलग points रहते हैं, random points में से एक एक point में एक मतलब notes रहते हैं। और मेरा लिंक्डइन पोस्ट देख सकते हैं आप, इफ़ यू कैन। उसके अंदर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करा कि हाउ द सिस्टम्स वर्क, कॉन्स्टेंटली मैं पोस्ट करते रह रहा हूँ। ऐसा ट्रिगर्स रहते हैं, स्केयर ट्रिगर्स बोल के, जिससे चीज़ा होते। पर्पल ट्रिगर्स आर लोकेशन ट्रिगर्स, एमिटर है। द ग्रीन वंस आर स्केयर ट्रिगर्स, बट इमीडिएटली स्केयर ट्रिगर नहीं होता अगर पहले से स्केयर हो गया थोड़े टाइम में। रेड वंस इज़ अ फोर्स्ड स्केयर, तो नो मैटर व्हाट उसके थ्रू गए तो एक स्केयर होता। पूरे मैप में अराउंड लाइक 100 है, बट ईच लेवल में रैंडमली सिलेक्ट होते, तो ईच लेवल इज आल्सो काइंड ऑफ रैंडम। रैंडमनेस ऐसा है बहुत चीज़ों में। लोकेशंस में रैंडमनेस, रैंडम लोकेशन सिलेक्ट होके उसमें से रैंडम पॉइंट्स पे नोट्स स्पॉन होते हैं, वैसा है। So it's kind of like Slenderman, but with added things. और गेम के अंदर 7 एंडिंग्स है, डिपेंडिंग ऑन नोट्स कलेक्टेड, और उस नोट्स कलेक्ट करने के बाद एस्केप करना रहता। सो इफ यू आर एबल टू एस्केप सक्सेसफुली और नॉट। स्टार्ट पे आ जाओ वापस। Oh shit. गन ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहा है इन्हें अभी। स्टार्टिंग में मैं सोचा था कि एग्रेसिवनेस कम है, बट ऐसा रहा तो कोई भी कंप्लीट कर पाएंगा भी है क्या नहीं। एक्चुअली मैं बोल रू भी बोल के उसको बार बार मालूम हो जा रहा है मैं कहाँ थे रवा। एकदम पीछे है मेरे। Okay, now suspicion is working properly. पहले बहुत ज़्यादा ही जल्दी सस्पिशियस हो जा रहा था। इतना तो चलेगा। Oh shit. Oh फेंटिंग किच कर रहा हूँ।
Puppies. Oh shit. यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो कहाँ है नोट? अच्छा यहाँ है नोट. Oh, now we have the bloody Popeye. Chip. The vectors. पकड़ गया. पोपाई पकड़ लिया. ठीक है, अभी तक अभी के लिए तो अभी अर्ली एक्सेस के लिए ठीक ही है ये गेम. और बाद में दूसरी चीज़ आता उसको फाइन ट्यून करेंगे बाद में. और क्या करना था मेरे को इसमें? पोपाई पोपाई पोपाई. दो पोपाई. तो इसको हटा देना मरने के बाद. टन 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 टन. गेम डायरेक्टर. Add page if it is more than enough in game. नहीं, जब कॉट हो जाते प्लेयर कॉट. एजेंट गेम object are set and free false. तो क्या करना है इसमें? इवैल्यूएशन करते वक्त पिक अ रैंडम एक्शन, रजिस्टर्ड एक्शन, नॉर्मलाइज करो उसको. एक्टिवेट करने के लिए ट्राई एक्टिवेट. डायरेक्टर से पूछना पड़ता. अगर डायरेक्टर ओके बोला. सेंसिटिविटी, ग्लोबल एग्रेशन, math of exponential minus k, because this exponential will get in minus minus minus. This is plus 1 plus blah. So if the aggression is high and the influence is high,
then this will be high. But no, this will be low, sorry, and the value will be selected. If budget granted is true, then we will. Yeah, if budget is granted by the director, then proceed. If budget is not granted, then mark the action is used and then handle output. Output may suspicion if it is more than 40%, 40, then start chasing, otherwise don't chase. It is based on the context of the action. Yes, okay. Begin vanish sequence, reappear, blah blah blah. I think एक चीज में करना चाह रहा हूँ मगर वो उसके लिए दिमाग खराब है. Um, Paseta. वापस यूनिटी साइट में जाके नहीं, मेरे को अभी और वो नोट्स भी बनाना है, नोट्स बना के सुबह करना है, बट आई थिंक इतना दिस इज मोर देन इनफ. चेंज इट टू यूनिटी. तो ये पूरे जो है सो अपने पॉसिबल, these are all the possible placements of things basically. All the green ones are scare triggers if you game trigger, and each of the trigger has a buffer time. मतलब इसके थ्रू में गया तो 2 मिनट तक फिर से ये एक्टिवेट नहीं होता, मगर 2 मिनट के बाद फिर से रीएक्टिवेट हो जाता. दीज आर वन टाइम यूज ओनली अभी के लिए. तो फोर्स ट्रिगर्स खाली एक बार ही काम करते हैं. ये पर्पल वाले जो है सो एमिटर्स है. दे नोटिफाई द एआई if we pass through them. Each area has their own area triggers that will notify the in system that we are in this area. Or on pickup of the notes, there's a random chance of a jump scare to be played. Off topic, what to do when the game is installed but not shown anywhere on the phone and I can't open it. Game is installed but not anywhere. अननोन सोर्सेस बोल के फ़ोन में भी रहता क्या? यूजली इफ इट इज़ इट्स या एक्चुअली रहता इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेस. What to do when the game is installed but not shown anywhere on the phone and I can't open it. That is interesting. यूजली अननोन सोर्सेस एनेबल करे फाइल मैनेजर में जाके या सेटिंग्स में जाके तो दिखना चाहिए, स्पेशली अगर डेवलपर ऑप्शन ऑन है तो. अपने फाइल मैनेजर में जाके चेक करो एक बार, फाइल मैनेजर या ऐप मैनेजर या वॉट एवर ऐप्स बोल के जो है उसके अंदर आ रहा है या नहीं. एक रीज़न ये हो सकता कि उसका जो नाम है ना, वो नाम बोले तो com.company name
package name. If it is same as some other game, then that game will be reinstalled in a way. So let me show you. If we go and build profiles, I don't think you can see it अभी अभी देख सकते होंगे. Build profiles, player settings actually. So player settings के अंदर there'll be this uh, usually ये default नाम रहता है ऊपर, default company and the product name and this package name जो है override package name जो आ रहा है यहाँ पर. So this can be one reason. If it is like go it is same as another game, तो वो टाइम पे जो है सो वो वाला गेम अपडेट होता. Because when installing, this name is being used by the system, basically Android, to identify what is being installed. तो ये एक मेरे साथ हुआ था reason. This can be one reason. Apart from that, if the name package name is changed and still it is not visible, then you have to see if it is actually installed or not. कभी कभी क्या रहता है, इंस्टॉल होने के बाद ऐसा बताता सक्सेसफुल है बट एक्चुअली इंस्टॉल नहीं होता फॉर सम लाइक लास्ट मिनट रीज़न, आई डोंट नो. कभी कभी एंड्रॉयड में होता वो, बिल्ड ख़राब रहा या कुछ मिसिंग रहा तो वो रीज़न हो सकता मे बी. Or maybe in your phone, apps from unknown sources are not shown in the Explorer or whatever it is called, like app drawer. तो वो एक बार चेक कर लो. That is a weird one though. But primary reason failed installation हो सकता या सेम पैकेज नेम हो सकता. यूजुअली ये अपने साथ होता, मतलब इफ़ यू आर क्विकली मेकिंग अ गेम और फिर एक न्यू गेम बनाए, दोनों का सेम पैकेज नेम रहा तो वो पहले वाला गेम अपडेट होता. मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ था स्टार्टिंग में. फिर मैं रियलाइज़ करा था ओ शिट ये इसलिए हुआ बल्कि. बेस्ट वे क्या करना रहता, अगर आपके पास फ़ोन है अपना तो उसके अंदर ABD ऑन कर लेके फिर बिल्ड एंड रन करना. और जब बिल्ड कर रहे तो ऑटो डेवलपमेंट बिल्ड करके ऑटो कनेक्ट प्रोफाइलर करो, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट करता आपके यूनिटी प्रोफाइलर के साथ. सो यू विल नो इफ इट इज़ एक्चुअली बीन इंस्टॉल्ड और नॉट. बिल्ड टू डिवाइस कर लेके. दूसरा तरीका है लॉग कैट से चेक करना. ABD के थोड़े वो रहते कमांड्स रहते, तो लॉग कैट में जाके ABD यूज़ करके जो है सो यू कैन चेक few things if it is installed using some command or not. There are ways to check it. ये दिमाग खराब सिस्टम था वो. अगर फर्स्ट टाइम जब मन बनाया था, I can see the game in manage app settings but not in the app drawer. Let me try ABD. You can see it in manage app in settings app, but you cannot see it in your drawer. That is weird.
Mm, that is actually quite weird. बिल्ड एंड रन करके देखिए अगर बिल्ड एंड रन हो रहा है या नहीं हो रहा पहले तो। अगर आप मैनेज ऐप में देख सकते हो तो मतलब उसका नेम डिफरेंट ही छूंगा पैकेज नेम। मैनेज ऐप में पैकेज नेम के हिसाब से सॉर्ट होते हैं नाम। यूज एक और एक रीज़न क्या रहता है मालूम है एक्चुअली। एंड्रॉयड में मैनिफेस्ट बोल के रहता है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। उसके अंदर जो है सो ऐप आइकन क्या रहना चाहिए और आइकन का नाम क्या रहना चाहिए वो सब चीज़ें रहते हैं। तो अगर एक करप्टेड मैनिफेस्ट भी रहा ना तो आपका, या कोई मैनिफेस्ट में कुछ खराबी है गड़बड़ी है या समथिंग, तो आपका ऐप गायब हो सकता है। सो सिस्टम ऐप्स जो रहते हैं ना उन लोग के लिए यूजली करते हैं ये। सिस्टम ऐप्स को अपन बताना नहीं चाहते हैं ड्रॉअर में, बट रन करते हैं उन लोग को। So that can be another reason if you modified your manifest and did not merge it properly or do something like that, तो प्रॉब्लम हो सकता है ये वाला। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट रहता है और एक कोई चीज़ रहती है आई थिंक एंड्रॉयड। एक और एक तरीका क्या रहता है प्रोजेक्ट को आप एक्सपोर्ट करना एज नॉट अ बिल्ड बट exported and open it in Android Studio to see it more clearly। अगर आप ज़्यादा टेक्निकल जाना चाह रहे, but that's a bit complicated। तो अगर आप देखें यहाँ पर there's a option of exporting the project, not building it। So when you export a project you make and you basically export it as an Android Studio project, and then you open it in Android Studio to go through all the files completely, like build करे हुए files जो रहते। The way Unity actually works is it creates a activity in Android। a main activity रहती, वो main activity के अंदर and वो रन करता, यूनिटी रन करता। और उसके लिए अपने को एक मैनिफेस्ट होना पड़ता। वो मैनिफेस्ट विल से कि व्हाट विल बी द ऐप आइकन, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द ऐप ऑन द ड्रॉयर एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी शोन देयर। एंड नोटिफिकेशन आइकन रहा तो वो क्या रहता एंड ऑल दोस काइंड ऑफ ब्ला 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 ब्ला। तो वो भी अगर कुछ गड़बड़ रही तो ऐप गायब हो सकता, बिल्ड होता इंस्टॉल भी होता बट दिखता नहीं। सो दैट कैन बी अनदर थिंग दैट यू माइट लुक इनटू कि अगर आप रन भी कर रहा तो आइकन क्यों नहीं दिख रहा। सो दैट कैन बी अ रीज़न। Actually takes Firebase। तो वही 6 रीज़न फिर मैं जो बोला मैनिफेस्ट का जो रीज़न है वही है। अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग मोर देन लाइक व्हेन यू हैव टू ऑलवेज resolve your dependencies if you are using all those kind of things। तो यूजुअली क्या रहता है इन लोग के एंड्रॉयड में ईच प्लगइन ऑफ एंड्रॉयड विल हैव देयर ओन मैनिफेस्ट, and you have to either manually merge the manifest or you can use force dependency resolve
दैट वी हैव। तो प्रॉब्ली वही रीज़न है आपको जो मैं बोला अभी, कि आपके मैनिफेस्ट मर्ज नहीं हुए होंगे एंड अदर बिहाइंड द थिंग्स 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 जो रहते हैं जो मर्ज करना पड़ता प्रॉपरली टू मेक दिस वर्क प्रॉपरली। Each plugin of Android will have their own manifest and their own ग्रेडल बिल्ड कभी कभी रहता, दो तीन चीज़ा रहते भाई। तो उन लोग को जो है सो मर्ज करना पड़ता, मैन्युअली भी कर सकते हैं अगर आप एडवांस लेवल यूज़र रहे तो। easier way would be you to use the utility that Unity provides, or rather Google provides in a way, for merging the all the necessary files into one usable thing. या वो सक्सेसफुल होता, बट आप मैन्युअली चेक करना प्लगइन में जाके वो हो रहा है या नहीं। फर्स्ट रिजॉल्व इज यूजली सक्सेसफुल हो जाता वो। तो आप ए बी डी से ही आप चेक कर सकते हैं एक्चुअली। सो आप बिल्ड करो और ए बी डी में चेक करो, और फिर अब वो आप मैनुअल चेक ही करना पड़ता है एक्चुअली देखा जाए तो। फायर बेस से डालने के बाद हो रहा बोले तो वही एक रीज़न रह सकता है। आप आइकन और वो मैनिफेस्ट जो है सो प्रॉपरली मर्ज नहीं हो रहे होंगे तो। दिमाग खराब है थोड़ा। बट लक बट लकीली आप अब तक iOS डेवलपमेंट नहीं टच करे। iOS में जाते थे तो आप रोना शुरू कर देना। ओफ, iOS का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है। यूनिटी में एवरी टाइम प्रोजेक्ट बना के आपको एवरी टाइम एक्सपोर्ट करना पड़ता, और फिर एक्सपोर्ट में जाके फिर से रीबिल्ड करना पड़ता, और दो दो बार हर चीज़ करना पड़ता। और एवरी टाइम आप रीबिल्ड करें आपको जो है सो बहुत सारी चीज़ें सेटअप करना पड़ता। ओ माय गॉड। हम लोग लिटरली जो है सो एक हफ्ता छोड़ देते रख देते थे खाली iOS बिल्ड्स बनाने के लिए कभी कभी। इसलिए ऑटोमेशन यूज़ करते लोग। क्वाली में जब मैं काम कर रहा था, जब ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड था जेंकिंस यूज़ करके, मेरे को कभी बिल्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। खाली कोड पुश करो और ऑटोमेटिकली बिल्ड्स बन जाते थे। वो जेंकिंस सेटअप करना एक अलग टास्क था, बट वन टाइम सेटअप रहता था यूजुअली। गुड लक। बेस्ट ऑफ लक। और एक हेड्स अप अभी दे दे तू कि एंड्रॉयड और iOS के रेजोल्यूशंस अलग रहते हैं। फ़ोन रेजोल्यूशंस जो रहते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशंस जो रहते हैं अलग रहते हैं। iOS के बहुत ऑफ रहते हैं, बेसिकली ऑकवर्ड रहते हैं। ओह माय गॉड। धुन धुन धुन। कितनी देर से कर रहा हूँ मैं स्ट्रीम इसको अभी। घंटा बट अगर अभी मैं तो अभी मेरे को ये भी देखना है मेटा का क्या दिमाग खराब। मेटा के क्या रहते कंप्लायंसेस, मेटा के अलग बहुत सारे कंप्लायंसेस है अगर मेटा के अंदर गेम डालना है तो। मेरा अकाउंट एक्सेप्ट तो कर लिए लगा, सो आई एम एन ऑफिशियल मेटा डेवलपर नाउ, बट पेज भी बना दिया, सब बना दिया। मेटा का एक सबसे
अ, रोने की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका गेम 72 FPS रन करना मिनिमम। 72 FPS रन करने के चक्कर में मैं क्या नहीं करा मेरे को ही मालूम, क्या क्या नहीं करा मैं। पूरे टेरेन सिस्टम को जो है सो रीबिल्ड करना पड़ा इन अ वे मेरे को यूनिटी का, बिकॉज यूनिटी टेरेन इज नॉट व्हाट यू से, क्या बोलते हैं, compatible with VR. Unity trees are not compatible with VR. We can use them, but वो यूज़ करने के बाद मेरे को 30 FPS मिल रहा था खाली, 30 to 60 FPS मिल रहा था एट टाइम्स। सो उसको वो 72 FPS टच करने के लिए मेरे को जो है सो पूरा ट्रीज को बेक करना पड़ा, पूरा टेरेन को बेक करना पड़ा, एक अग्रेसिव एलओडी सिस्टम बनाना पड़ा जो हर चीज़ को हाइड कर देता सिवाय अपने इमीडिएट रेडियस में जो चीज़ा दिखते हैं। गुड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली, बट वेरी हार्ड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। गेम बहुत ज़्यादा ही और घड़ी हरियाली भरी हुई थी गेम में पहले। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू थैंक यू। मगर डालना पहले गेम मेटा स्टोर पे आना, और मेटा स्टोर पे आई एम गोना पुट अ पेड गेम, एक्चुअली इट्स नॉट गोना बी अ फ्री गेम। इतनी मेहनत करने के बाद फ्री में नहीं देगा मैं ये गेम, क्योंकि कमाना है ये गेम से। ज़्यादा नहीं रहेगा, खाली $2.99, $3 का गेम रहेगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस द अमाउंट ऑफ गेम प्ले दैट आई एम गिविंग। रिप्लेबिलिटी है गेम में, मल्टीपल लोकेशन, मोर देन 10 लोकेशंस है, मेनी जंप स्केयर्स एंड मेनी शिट, एंड 7 एंडिंग्स है गेम में। So I think for $3 game, VR game, average play time would be like 30 minutes to one, more than 1 hour actually, if you get lost. But congrats, level one. देखना क्या होता। मोबाइल गेम्स का तो वही स्लो ग्रोथ है। पर मंथ $1, $1.5 पर मंथ आ रहे हैं अभी, तो उससे 2000 डाउनलोड्स हो गए शायद। टोटल डाउनलोड्स लाइक अराउंड 3000 टोटल डाउनलोड्स हुए शायद, बिकॉज नो मार्केटिंग एंड नो नथिंग। तो बट VR गेम की मार्केट में जगह है अभी भी, तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। हो गया तो हुआ। अच्छा बात, पड़ा हुआ है हेडसेट। बट सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल एक्चुअली ऑप्टिमाइज करना है VR गेम को, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल वो है। पर देखा जाए तो इन वे मोबाइल गेम जैसा ऑप्टिमाइज करते वैसे ही ऑप्टिमाइज करना पड़ता है इसको। गेम हैज रीच 10K डाउनलोड्स, कौन सा गेम, विच गेम? लाइक कंपनी के साथ जो बना रहे वो स्लाइडिंग वाला, या रोली, नहीं रोली पोली तो नहीं है आपके पास, तो आप बलूनी की बात कर रहे हैं क्या? रोली पोली तो आप VR उसमें प्ले स्टोर पे नहीं डाले। तो बलूनी की, क्योंकि अगर आपका चेक करा मैं तो बलूनी थे आपके पास अभी, थोड़े दिन पहले ही चेक करा था मैं। और आर यू टॉकिंग अबाउट द गेम दैट यू मेड विथ योर कंपनी यू आर करेंटली वर्किंग एट? आई डोंट नो विच गेम यू आर वर्किंग, वो कुछ स्लाइडिंग वाला, कंपनी वाला। नाइस नाइस, वेरी नाइस। मार्केटिंग कर रहे होंगे, प्रमोशन तो कर रहे होंगे, 10K डाउनलोड आए बोले तो आई डोंट थिंक ऑर्गेनिक होंगे वो पूरे। अगर ऑर्गेनिक रहे तो इट्स वेरी गुड, बट आई डाउट ऑर्गेनिक है।
बट एनीवे congratulations for the 10K downloads. प्रमोशन करे नहीं जो भी करे, ग्रोथ तो है, and that is also good for you as a developer. Okay, I think thank you Fai for joining the stream. I'm done with today अभी का streaming because I have to go grab some lunch, dinner, whatever. कुछ खाना खाना है मेरे को. साथ में फिर मैं बाद में शायद शाम में करूँगा stream when I'm making the artwork for the notes and things like that. I don't know, vertical streams. I heard कि vertical streams are better, but I don't know. I'm not feeling vertical streams का fun उतना ज़्यादा. Anyway, let's let's end the stream. खाया खाली 1 घंटा करा मैं अब तक. 1 डेढ़ घंटा ही करा खाली, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम था नहीं मेरे को करने के लिए. मैं पूरा कर लिया था वाले गेम के लिए.